in this molecular logic of life, we were looking at the cellular foundations, और cellular foundations के अंदर मैंने आप लोगों को explain किया है उन तमाम attributes का which are common among all the living organisms. All of them are made up of the basic units which are the cells. They all of them have plasma membrane, all of them have nucleus, and they all have a cytoplasm, and they also have organelles जिनके अंदर काम की distribution है, right? हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना क्या है? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, हमने न्यूक्लियस की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, हमने जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है, हमने साइटोप्लाज्म और इसके अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast as well in case of plant cells. We will be studying them in journal. इनके अंदर जो biochemical aspect, इन aspects को पढ़ेंगे. Okay? So यहाँ पर इन दो lectures के अंदर this part 1 which is the foundations of biochemistry and the part 2 which I'm going to upload soon inshallah. यहाँ पर you just these are just for the sake of understanding. आपके जितने भी ideas जो आप लोगों ने biology के बारे में चीजें पढ़ी हैं, I repeat that. इन तमाम चीजों को रिफ्रेश करने के लिए ये लेक्चर्स बनाए गए. यू डोंट नीड नोट्स फॉर देम. ओके, जहां पर आपको नोट्स चाहिए होंगे जब हम केमिस्ट्री ऑफ वाटर स्टार्ट करेंगे, जब कार्बन पढ़ेंगे, तो वहां पर आपको जब नोट्स चाहिए होंगे आई एम गोइंग टू प्रोवाइड देम. ओके, आपके ये दोनों लेक्चर्स आपके क्लास मटेरियल के फोल्डर के अंदर मौजूद हैं और जो बुक है आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक एंड आई एम गोइंग टू अपलोड द बुक इन दैट क्लास मटेरियल एज वेल टुडे. राइट, आगे हमारे पास मॉलिक्यूलर लॉजिक आ जाती है जी लाइफ की, जिसके अंदर वी हैव दिस आइडिया के सेल्स का साइज स्मॉल क्यों है और लार्ज क्यों है. उसके लिए मैंने आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर दो लिमिट्स बताई थी. देयर इज ए अपर लिमिट एंड देयर इज ए लोअर लिमिट. एक सेल का साइज कम से कम कितना हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है. सिंस वी नो कि हमारे पास जो एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर लेस देन 1 नैनोमीटर इन देयर साइज, right? And we have bacteria and we have proteins and we have ribosomes. In tamam ka size, by the help of cell fractionation we are able to know इनका size. For example, ribosomes का size जो है it is around, because in higher organism they can be larger or smaller in size. Even the bacteria they are variable in size depending upon their environment जहाँ पे वो मौजूद होते हैं. They can vary in size. Even in the case of mitochondria, their size varies within living organism. For example, हमारे skin है वहाँ पर number of mitochondria is lesser as compared to the number of mitochondria, and the size of mitochondria which is present in our brain cells or in our liver or kidney cells, because they utilize more energy as compared to the skin. So यहाँ पर जो साइज है इसके लिए एक रेशो है विच इज बिटवीन द साइज एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सेल. स्मॉलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, जितना ज्यादा उसका साइज स्मॉल होगा उसके अंदर रेट ऑफ डिफ्यूजन, आई होप यू ऑल नो what is osmosis, right? Rate of diffusion is actually dependent upon the size of the cell. अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करें तो यू नो द साइज ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. इफ इट इज एन अरेबिक बैक्टीरिया, देन दिस अरेबिक बैक्टीरिया इसका साइज इतना स्मॉल है कि इसके तमाम सेलुलर कंपोनेंट्स को, बिकॉज बैक्टीरिया इज जस्ट वन सिंगल सेल and some of the bacteria are able to survive only in the form of a colony, या फिर वो एक क्लम्प या ग्रुप की शक्ल में रह सकते हैं. वहां पर जब ये क्लम्प्स या ग्रुप की शक्ल के अंदर मौजूद होते हैं वहां पर दे हैव दोस प्रोसेसेस ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जो कि ऑक्सीजन को या कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके एनर्जी को कंज्यूम करेंगे. When a bacteria is able to live in an isolated manner, the entire volume of that bacteria या उसकी जो entire surface है it is directly exposed to oxygen or any other gas जिसके ऊपर वो depend कर रहा है. For example, there are some bacteria that would require methane gas for their survival. Since all of the cellular environment, इसका तमाम जो plasma membrane है या cytosol है, it is directly exposed to the atmosphere. For example, oxygen. Each part and every corner of that cell is exposed to oxygen that can readily diffuse into it, right? And readily diffusible oxygen की वजह से it doesn't need that machinery जो कि oxygen को utilize करे, electron की transport करे, ATP और NADPH की production करे.
When we talk about larger cells, for example, मैं animal cells की अगर बात करूँ, they are larger in size and they have more volume as compared to the size of, for example, oxygen molecules. So the oxygen is going to, for example, in one part of the cell, oxygen is being diffused and the other part is being required. तो यहाँ से यहाँ पहुँचने के अंदर it's going to take like more time. Since it's going to take more time, so that's why these higher cells have more complex organelles, जैसे कि mitochondria, chloroplast, and they also have receptors and signaling molecules जो कि इस oxygen की consumption को from one corner go to the other corner of the cell, it's like able to utilize it, right? मतलब ये कि हमारे पास complexity we have with respect to size और ये size हमारे पास decide करता है कि एक सेल के अंदर क्या क्या बायोकेमिकल कॉम्प्लेक्सिटी है जो कि पाई जाएगी. Then we have different domains of life. Domains of life के अंदर you all know कि तमाम living organism का ancestor according to science. इनका जो ancestor है that was common. Then upon के ये हमारे पास ये इनकी तीन main classes आ जाती हैं जहाँ पर हमारे पास बैक्टीरिया है, आर्किया है, यूकेरिया है. यूकेरिया के अंदर we have plants, we have animals, we have flagellates, we have humans, and we have fungi. Okay, archaea के अंदर हमारे पास तमाम bacteria who are able to live in extreme environment. In bacteria, it is a complete dimension of life, and they have different abilities to utilize the energy. With respect to energy consumption, हमारे पास दो तरह के organisms हैं. Either they are able to utilize light energy directly to carry out their life activities. Otherwise, they're able to use organic or inorganic compounds, which means they are chemotrophic. जबकि जो लाइट से हैं, they are phototrophs. अब ये chemotropes और phototropes ये तमाम चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं. Just for the sake of revision, I added these things. Then we have phototropes जिनको हम further divide कर सकते हैं कि जो कि organic compounds को भी require करते हैं along with the light energy, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से रिक्वायर करते हैं, और उसके लिहाज से इनकी हमने डिफरेंट डिवीजन की हैं. फॉर एग्जांपल इफ इट इज ए फोटोट्रोप and then it is also dependent upon organic material for the production of energy, then it will be called as a photoheterotroph. If it is able to utilize the carbon dioxide within the environment, for example हमारे जो plants हैं, and then they also utilize oxygen and they are able to synthesize their own food, they are called photoautotrophs. जहाँ पर हमारे पास इनके लिए organic inorganic chemical sources चाहिए होंगे, they would be called chemoheterotrophs or chemoautotrophs. Auto who are able to autonomously use the energy. और यहाँ पर जो मैंने आपको एक चार्ट बताया है, इस चार्ट के अंदर you will be able to see the division. ठीक है, so हमें पता चलता है कि जी हम किस कैटेगरी के अंदर आते हैं और हम क्या हैं, हम फोटोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स हैं. we are chemotrophs. ठीक है, और कीमोट्रोप्स के अंदर वी आर हेट्रोकीमोट्रोप्स, मतलब कि हम केमिकल्स को यूज करते हैं फॉर द सेक ऑफ एनर्जी एंड वी हैव टू यूज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर द सेक ऑफ एनर्जी, राइट. ओके, अब यहाँ पर हमने जो रिएक्शंस पढ़ने हैं, दे आर गोइंग टू बी मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू that take place within the chemotropes, chemoheterotrophs. लेकिन photoautotrophs के अंदर we have some reactions like photosynthesis है या फिर light and dark reactions है. We are also going to discuss them when we will be doing the utilization of carbon dioxide molecule, right? Okay, then we have okay, simple prokaryotic eukaryotic cells के बीच में differences हैं. यहाँ पर मैंने आपको E. coli की example दे दी है, उसकी plasma membrane कैसे different है, ये क्यों different है, इसका size क्या है, और with respect to size मैंने इसके बारे में थोड़ी सी chemistry आपको बता दिया. You just need to know why they are different. Okay, ये जो इसके अंदर हमारे पास gram positive negative bacteria होते हैं, why they are different, because of the presence of a sugar molecule within this layer of peptidoglycan, which has a sugar molecule along with amino acids, right? Then we have differences between the animal and the plant cell. That's really simple. I think yeah, सब cell biology के अंदर पढ़ के आए हो, I don't need to like repeat that. Then we have okay, structural hierarchy, and you see that within the cells we have the monomeric units, we have nucleotides, and these nucleotides are made up of what? Pentose sugar. Pentose means 5 carbon sugar,
and a phosphate group and nitrogenous base. ठीक है, ये तमाम मिलकर न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं. न्यूक्लियोटाइड्स, they make up the DNA, and the DNA then makes up the chromatin and then the chromosomes and all that. With respect to protein, हमारे पास जो basic amino acid basic units है, which is mainly composed of amino acid. Amino मतलब इसके अंदर NH group मौजूद है, NH3 और NH2 पॉजिटिव, या फिर इसके अंदर एक साथ में इस अमाइनो के साथ एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप C डबल बॉन्ड OH या फिर C डबल बॉन्ड O विद नेगेटिव चार्ज ओवर इट, ये इसके अंदर कंबाइंड मौजूद होते हैं. जी, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? Okay. Right. So we have amino acids, the different amino acids का combination, not only their combination, you know, we have nature के अंदर we have more than 300 amino acids, right? But जो आपने याद करने हैं या फिर जो हमारे लिए important हैं, they are just 20 or 21. और उसके अंदर भी वो वाले which are really important, we are going to divide them into different groups, polar, non-polar, hydrophobic, and hydrophilic, and then you will be able to memorize them in a nice way. And then we have proteins, and these proteins are made up of different macromolecules. इसी तरह हमारे पास यहाँ पर sugars के भी monomeric unit हैं. You see a glucose, which is glucose जो इसका basic building block है और level number 1 के ऊपर आता है. And then these glucose units are arranged with each other either in a linear way or in the form of chains, resulting in the formation of different complex supramolecular structures, right? So this is the structural hierarchy, and then we have the summary, right? So this lecture was actually about just refreshing your basic knowledge of biology, and the other one would constitute the next lecture में आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों के साथ share करूँगी. This next lecture is also going to be about some basic chemistry of carbon and some stereochemistry of carbon. ठीक है, और उसको भी आप लोगों ने याद नहीं करना, you just need to like understand that, ताकि हम आगे जाकर जब कार्बन की केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई डिफिकल्टी ना